చిన్న క్వశ్చన్ అక్కడ మందారం చెట్టు దిగ్గా లేక కాంప్లెక్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు మందారం చెట్టు అదే గుడి గుడి గుడికనా మంజు चलो 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 अच्छा आओ 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 begini lagi Pournami की खत्म होने वाली है Bring it out. Should I bring it? Yeah. Because if you keep that, somebody will make it. Right. I'll put it there. Get bar. Get bar.
आपका प्रसाद बोल हाँ बिल्कुल रहता है Will you be closing that door? Yeah. Wait. Last one, sir. తలుపులన్నీ తీసేసారు చలి పెడుతున్నారు వస్తువులు కానీ బయటకు రాదు కదా. అదే Only one. Only one you put in front of the God. Which one? Yeah, that's The one. one. That's one. Keep it on the floor. Keep it on the floor. Yeah. Front of the bottom. You have to put the In front of God. In front of the God. Yeah. Yeah. Yes.
అగరబత్తి దాంట్లో పెట్టేసారు. One is enough. One is enough. One is enough. Oh, Yeah. thank you. మొత్తం అన్ని కలిపిస్తే సార్. స్పూన్ సార్. కప్స్ లేవండి. కప్స్ అక్కడ వెండిది సారీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చెంబులు ఉన్నాయి కదా, తెచ్చేసుకోండి పర్వాలా. వాటర్ పెట్టుకుని ఒకటి తెచ్చేసుకోండి. అక్కడ బాస్కెట్స్ లో ఉన్నాయి చూడండి. కోట్ వేసుకుని అతను ఆ టెంపుల్ లో ఉంటాడు. అక్కడి నుంచి వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్. কিন্তু ওই টেম্পলে এরকম দেখি না, লাইন দিয়ে পুজো করা పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు కావాలంట. To use this plate and for them also one more plate for them. Yeah. We need kunkuma, haldi and akshatas we need for puja. They are giving. Glasses.
Plastic spoon. వాటికి వెళ్ళారా మీరు? వస్తారు గుర్తంలో నీకు పెద్ద ఫోటో ఉంచాలి పెద్ద కొండలు tumbler cotton. Show your glass. Show your glass. నీళ్ళు ఉన్నాయండి. Wash your hands. You are doing Sathya Vratha and Chithra Pournami, Chitragupta Vratha. Take some akshatas, yellow rice. Yellow rice. Repeat it. Aseshe, he parishat, bhavat, padamule, maya samarpitam, imam, sauvaranim, dakshinam, yatkinchit, dakshinam, yathokta, dakshinam iva, tambulancha, srikrutya. Tell your gotram, your stars, your nakshatram, your name. बोलिए आपका अच्छा हटता आवयोः मम सह कुटुंबयोः सर्वेषां रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामी प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं चित्रा पौर्णमी महोत्सव अंगत्वेन सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिं अनुग्रहाण आवर्तत फोटो. Take some akshatas one more time. Cover your both hands. Right side. Repeat it. Mamopatha samasta duritakshaya dwara Shri Parameshwara Prityartham. Left hand down, right hand upside. Down, right hand upside and right side. Right knee. Shri Parameshwara Prityartham Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Tarabalam Chandrabalam Tadeva Vidyabalam Daivabalam Tadeva Lakshmi Patehe Angri Yugam Smarami Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Pararthe Shweta Varaha Kalpe Vaivaswata Manvantare अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे ऐन्द्रकखण्डे भ्रमणकवर्षे मेरोः
पर्वतस्य पश्चिमे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे मेषमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः भौमवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां पौर्णम्यां शुभतिथौ आवयोः मम सहकुटुम्बयोः सर्वेषां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनसि चिन्तित सकल मनोरथ अवाप्त्यर्थं मम सहकुटुम्बस्य जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृति एतत् क्षण पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धके च जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादिभिः संभावितानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनद्वारा पूजैக்கு வந்திருக்கல ஓகே ஓகே நீங்க தமிழா நீங்க वल्लभा महागणपति आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक वाणी हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण उमामहेश्वर सहित रमादेवी सहित सत्यनारायण व्रत पूजा करिष्ये तदंगम धर्मराज सहित चित्रगुप्त प्रीत्यर्थम रौरव महारौरव नरकपद निवृत्त्यर्थम पुण्यलोक प्राप्त्यर्थम चित्रा पौर्णमास्यां चित्रगुप्त पूजांच अद्य करिष्ये तदंगम कलश पूजांच अद्य करिष्ये. Look at the bowl. Akshada offered the bowl. Steel plate. The kinnatra utudunga. Wash your hands. The plate la potudunga. Wash your hands. अनादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा. अस्मिन् बिम्बे वल्लभाभागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि. महागणपतये नमः. आसनार्थमक्षतां समर्पयामि. पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. भूर्भुवस्वः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि. वस्त्र उत्तरीय उपवीत आभरणार्थे अक्षतां समर्पयामि. दिव्य श्रीपरिमलगन्धान् धारयामि. गन्धानामुपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. अक्षतां समर्पयामि. पुष्पमालिकां समर्पयामि. पुष्पैः सम्पूजयामि. Offer one petals in Ganesha. கையிலே வச்சுக்கோங்க.
मन्त्रमुनिरपं சொல்லுங்க. ஓம் சுமுகாய நமः, ஓம் ஏகதந்தாய நமः, ஓம் கபிலாய நமः, ஓம் கஜகர்ணகாய நமः, ஓம் லம்போதராய நமः, ஓம் விகடாய நமः, ஓம் விக்னராஜாய நமः, ஓம் விநாயகாய நமः, ஓம் धूमकेतवे नमः, ஓம் கணாத்யக்ஷாய நமः, ஓம் பாலச்சந்திராய நமः, ஓம் கஜானனாய நமः, ஓம் வக்ரதுண்டாய நமः, ஓம் ஊர்பகர்ணாய நமः, ஓம் हेरम्बाय नमः, ओम स्कंदपूर्वजाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः, महागणपतये नमो नमः। नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। दशांगं विद्युलं धूपं सुगन्धं मनोहरम् आश्रे सर्वदेवानां धूपोदं प्रतिगृह्यताम्। महागणपतये नमो नमः। सुगंध धूपम् आघ्रापयामि। राज्यं त्रिवर्ग संयुक्तं वह्निना योजितं मज ध्यानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यविनिरावहं। महागणपतये नमः। रिपीट। महागणपतये नमः। दीपं संदर्शयामि। धूपदीप अनन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। कदलीफलानि नारंगफलानि अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः पूगीफलकर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। नमस्तोपचारान् समर्पयामि। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने गुरुसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतिर्मगमस्तापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनदीपन्दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। रक्ष रक्षान् धारयामि। सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। Take some akshatas. Repeat it. Vakratunda, Mahakaya, Suryakoti, Samaprabha, Nirvignam, Kurume Deva, Sarva Karyeshu, Sarvada, Sumukascha, Ekadantascha, Kapilaha, Gajakarnakaha, Lambodharascha, Vikataha, Vignarajaha, Vinayakaha, धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः फलासङ्ख्यानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। महागणपतये नमः। मनसाभीष्ट प्रार्थना पूर्वक वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। स्वर्ण पुष्पं समर्पयामि। छत्र चामरादि समस्त उपचारान् समर्पयामि। Take one spoon water. Tell inside 12 times Om Namo Narayana. 12 times. Om Namo Narayana. Inside 12 times. Coconut. The coconut
ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् धीमतस्रुतवेन आवह बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्चयोर्मशतश्चिरवः इमं मे वरुणश्रुतिः वमत्याडवृडया वाममस्युराटके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदास्तेरमानो हविर्भिः हेडमानो वरुणेः भूज्जरडं समानो आयुः प्रमोषिः एकसमक्षता संस्तवः रिपीटेड अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थ अधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणं आवाहयामि अपरदक्षिणम्. I am doing puja for here Chitragupta only. You follow panna bodu. You can follow. Okay. Don't do this. I am doing. Repeat that slokam. Chitraguptam महाप्राज्ञं मध्यस्थं सर्वदेहिनां ध्यायामि धर्माधर्मज्ञं लेखिनी पत्रधारिणी अस्मिन् कुम्भे चित्रगुप्तं ध्यायामि. நீங்க பண்ண வேண்டாம். இன்னொரு आवाहयामि देवित्वाम् अंतकस्य सभासदं कायस्थं करुणामूर्तिं कल्मषघ्नं कलाविदम् अस्मिन् कुम्भे चित्रगुप्तम् आवाहयामि. टेक सम अक्षतास्. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदभिस्य दुसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा. आफर्दत्कलशम्. अस्मिन् कुम्भे वल्लभा महागणपतिं ध्यायामि वल्लभा महागणपतिं आवाहयामि. ओम तामक. टेक सम मोर अक्षतास् and flowers. तामग्निवर्णान्तपसाज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः. धनाक्षेत्रस्य पतिना वजगुंहितेने वदयामसि कामस्त्वं पोषयित्वा सदा मृडादीदृशे यत इन्द्रभयामहे ततो न अभयङ्कृधि मघवञ्चक्षितवतन्न ओतये विद्विषा विमृधोरिहि स्वस्तिदा वशस्पतिर्वृत्रः विमृधोवसि ऋडेन्द्रः पुर एतनः स्वस्तिदा अभयङ्करः वास्तो अर्पते प्रतिजानीहि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्र महे प्रतन्नो जुषत् प्रसन्नयदित् उपदेशं चतुष्पदे. रिपीटेड. अस्मिन् कुम्भे दुर्गा गणपति क्षेत्रपालक इंद्र अभयंकर वास्तुपुरुष पंच लोकपालक देवतान् ध्यायामि आवाहयामि. Offer that collection. One more time. Take some akshatas and flowers. त्राता रविंद्रम अविता रविंद्रकं हवे हवे सुहवकं सूरविंद्रम हुवेन चक्रं बरुहोदमिन्द्रगस्वस्तिरामघवा धात्विन्द्रः हमीशान् जगातस्तस्तुर्पतिं ज्येन्जन्मवासे होमहे वयं पूषाणो यथा वेदा सामसद्भृते रक्यता आजिरदत्तस्वस्तये. रिपीटेड. अस्मिन् कुम्भे इंद्र अग्नि यम नैऋति वरुण वायु कुबेर ईशानादि अष्टदिक्पालक देवतां ध्यायामि आवाहयामि. One more time. Take it. तत्पुरुषात् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्रुतवेन आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्चयोर्मशतश्चिरवः वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि अन्नो वाणी प्रचोदयात्. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि अन्नो रुद्र प्रचोदयात्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि अन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि अन्नो विष्णु प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि अन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. रिपीटेड. अस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भं लक्ष्मी नारायणं उमा महेश्वरं च ध्यायामि आवाहयामि. Now we are offering main deity Sathya Swami. नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्स भूषितं गोविन्दं
गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैः अभिपूजितम् आवाहये गुणातीतं सत्यनारायणं प्रभुं लोकनाथं त्रिलोकेशं आभरणं हरिं अस्मिन् कुम्भे रमादेवी सहित श्री सत्यनारायण स्वामिनं सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं अस्मिन् कुम्भे सकल साम्राज्य नायकं अष्टैश्वर्य प्रदायकं रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिनं सांगं सायुधं अवाहनं सपत्नीपुत्र परिवार समेतं रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि. Take some akshatas. We are doing Navagraha Pooja. Om A Satyena Rajasa. First Surya. A Satyena Rajasa. Vartamano Niveshen Namrtam Martinja. Hirnayena Savitara Thena Devoya Devana Vashchanna. Aktin Dutam Rune Mahahotar Mishtavedasam Akshatasam. Asya Yajnita Sukrutam. Eshamesha Prabhatis Pashudan Jitaspada Mudajat Vivadam. Nishkri Doring Yatnim Purakar. निष्क्रिय दोरिंग यज्ञं भाग में राजकोष यजमानस्य संतोषितं. Repeated. सांगम सायुधम सवाहनम सपत्नीपुत्र परिवार समेतं मध्ये आदित्य ग्रहं सूर्य ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. नौ चंद्र आप चंद्राన్ని చెప్తున్నాను. ఆప్యాయ స్మసమేతే విశ్వతస్సమృష్ణియం భవావాదితదంగతే అప్సుమే సోమో అబ్రవీదంతర విశ్వానభేషజ అగ్నించ విశ్వశంభువమాపశ్చ విశ్వభేషదేః గౌరీర్మాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదే ద్విపది యసా చతుష్పది అష్టాపది నవపది బభూవే సహస్ర అక్షరా పరమే వ్యోమన్. సాంగం सायुधम सवाहनम सपत्नीपुत्र परिवार समेतं आदित्य गृहस्य आग्नेय दिग्भागे सोमग्रहं चंद्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अंगारक पूजा. अग्निर्मूर्धा दिवः कत्पतेः पृथिव्याजम् अपागं रेदागं चिन्वति योना पृथिविभवान् अक्षरानिवेशनि इच्छान् शर्म सप्रसाः क्षेत्रस्य पतिना वजगंहितेन वर्यामसि नामस्त्वं पोडयित्मासुरां मृडाति दृशे. Repeated. सांगं सायुधं सवाहनं सपत्नीपुत्र परिवार समेतं आदित्य गृहस्य दक्षिण दिग्भागे अंगारक ग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. नौ बुध. उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृह्य रमस्तापूर्ते रघुरुणेधामयञ्च पुनः सेत्वैरन्तुमेदम् इदं दुःखर्विचक्रमे त्रेधाणुदे पदं मूढमस्य भागं सुरे विष्णोरराटपद विष्णो पृष्ठपद विष्णोऽष्टत्रे विष्णोस्य वर्ध विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा. सांगं सायुधं सवाहनं सपत्नीपुत्र परिवार समेतं आदित्य गृहस्य ईशान्य दिग्भागे बुधग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. नौ गुरु. बृहस्पते अतयदर्यो अर्हाद्यमद्विभादिक्रतुमज्जनेषु यद्येत यच्छवसप्त प्रजात तस्मारुद्रविणं देहि चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमयदाशार्याते पतश्चतस्य तव प्रणीते तव शर्मन्ना विवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मरे ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् मतस्रोतवेन आवह बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योर्मुषतश्च विद्वाः. सांगं सायुधं सवाहनं सपत्नीपुत्र परिवार समेतं आदित्य गृहस्य उत्तर दिग्भागे
बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नौ शुक्र प्रवशुक्राय बाणवे भरद्वाजमव्यपतिजाग्ने सुपूर्णं यो दैव्यान्मानराजने पश्यन्तर विश्वान् विद्मना जिगाति राणी मासना ऋतुपत्नी महामश्रवं नह्यस्या परञ्जन जलसामरते पतिः इन्द्रं वा विप्रदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। Repeated. Sangam, Sayudham, Savahanam, Sapatni Putra, Parivara Sametam, Aditya Grahasya, Purva Digbhage, Shukra Graham, Dhyayami, Avahayami, Thapayami, Pujayami. Take some akritas. Now doing Shani. शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीतये निर्वित्रवन्तुनः प्रजापते मत्पदेतां यज्ञो विश्वा जातामि परिता बभूव यत्कामास्ते रुहुमस्तन्नो अस्तवे कृष्यामपतयोरयीणाम् इमन्यमप्रस्तरमाहीदाङ्गिरेव पितरभिः संविधानः आत्तान्त्राकविडस्तावहन्तेना राजन्नविटामाधयस्व। साङ्गम् सायुधं सवाहनं सपत्नी पुत्र परिवार समेतं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं आदित्य ग्रहस्य पश्चिम दिग्भागे शनैश्चर ग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नौ राहु कयानश्चित्र आभवदूते सदावृतसखा प्रयासरिष्ठया वृता आयंगो पुण्यक्रमे दशधर्माधरं पुनः वितरञ्च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निर्हृतिरेपबन्धदामग्रीवास्तविजत्यम् इदन्ते तद्विष्याम्यायषणमध्यार्थादेव पिदमुक्ते प्रमुक्तः। साङ्गं सायुधं सवाहनं सपत्नी पुत्र परिवार समेतं आदित्य गृहस्य नैऋति दिग्भागे राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। केतु लास्ट वन केतं कन्वन्न केतवेपेशो मर्या पेशसे सिद्धिर्जायथाः ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां येनो वृद्धाणां स्वधिर्पनानां गुंसामः पवित्रमध्ये तिरेवन्न अतित्रचित्रं चितयन्तमस्मै त्रक्षत्रचित्रतमम्बयोधां चन्द्रं रयं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रयन्द्रावृगृह्णते वस्व। साङ्गं सायुधं सवाहनं सपत्नी पुत्र परिवार समेतं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्य ग्रहस्य वायव्य दिग्भागे केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि। Take some akshatas and flowers. Repeated. Adityaya cha, Somaya, Mangalaya, Budhaya cha, Guru Shukra, Shanibhyascha, Rahave, Ketave, Namo Namaha, Asmin Kumbhe, Adhidevata, Pratyadhidevata, Sahitaya, Adityadi, Navagrahadin, Dhyayami, Avahayami. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आवाहयामि। Take some akshatas and flowers. Sahasrasirudha purudah Sahasrasirudha Labhomam Vishwato Vratha Atyadashangulam. Offer that kalasham. Avahayami. पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषाणः नातिरोहति। Take some akshatas, offer that kalasham. रत्नसिंहासनं समर्पयामि. Take 1 spoon water, show that kalasham. महिमा तदोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादयोः पाद्यं समर्पयामि. One more time, take some flower. Water, sorry, 1 spoon water. Tripadurdha udayit purudah padoosyeha bhavat punah atho vishwam yakramat ashanana shane abhi. Offer the kalasham hastayoh arghyam samarpayami. One more time, repeat it. Tasmaad yajnat sarvabhutah rajasaman yajnare
वाजायन्त एके च भयाततः गावो भगिरे तस्मात् जात अजावयः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपार्थपूर्णं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं तामतत्त्वस्तेषाणनेनातिरोधे रावणः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः अथो विश्वं यक्रामत् शासनानशने अपि अर्घ्यं समर्पयामि. One more time. तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः रातोऽत्यर्च्यत पश्चात् भूर्मुखो पुरः मुखे आचमनीयं समर्पयामि. अभिषेकं यद् अभिषेकं इष्टम् అది దానికోసం అనుకోండి జరపండి. எல்லாரும் அந்த அபிஷேகம் பண்ணலாம். आप भी अभिषेक कर सकते हैं. ठीक. వాటర్ తీసుకోండి. सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं गुरुरस्तद्विश्वमुपदेवति पदं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्यान आवाहन नगतवण्ड यच्चकिञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यथो मुखम् अथो निश्चापितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं मत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभक्तिभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः तस्य सन्तदा सन्दापश्यति स्पन्देहमापाततलमस्तकः वह्निशिखानीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यतमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवर्तन् तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्म स शिव सह रुद्रेन्द्रोत्तर परमस्वराट् सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं
समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे यज्ञो यज्ञपतर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभर्त्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवञ्जलमुनिजटा यदीडः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीशक्लेशान्गदन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ये सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति అభిషేకం చేసింది పాలు ఉన్నాయి కదా ఒక్క చుక్క కలుపుకోండి దీంట్లో కలుపుకుంటారా అందులో కలుపుకుంటాం పక్కన పెట్టేసుకోండి కడిగేమంటారా కడిగే వాటర్ ఉంది చూడు నన్ను జలం గీరు ఆ వాటర్ ఇక్కడ పెట్టండి కావాలని చూసి ఆ ప్లేట్ అందరూ వాటర్ ఉన్నాయి కదా వాటర్తో కడిగేసేయండి ప్లీజ్ సీట్ ప్లేట్ మాత్రం సార్ ప్లేట్ సుమ్మని இங்க இருக்க என்கிட்டயும் ஆமா நான் இது எடுத்துறேன் போல चित्रगुप्तगृहाणेदं शिरे मणिविनिर्मितम् आसनं हेमरचितं शुभास्तरणसंयुतं चित्रगुप्ताय नमः आसनार्थमक्षतां समर्पयामि पाद्यं गृहाण परमपापक्लेशविवर्जित पावितासेठभुवन चित्रगुप्त नमोऽस्तुते चित्रगुप्ताय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पार्कतैर्युतं चित्रगुप्तमहाप्राज्ञं पापं वारय मे अखिलं चित्रगुप्ताय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गृहाणाचमनं देव करुणारससागर त्राहि मान्नरकात् घोरात् देहि मे सुकृतं पदं चित्रगुप्ताय नमः आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं गृहाणेदं महापापविनाशन महतामपि पापानां विनाशं कलय प्रभो चित्रगुप्ताय नमः मधुपर्कं समर्पयामि पञ्चामृतं घ्राणेदं तुञ्चराचरवल्लभ पंचनादि समुत्पन्नं पापं मे विनिवारय चित्रगुप्ताय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नानानदी समानीतं नानाधर्म विशारद स्नानाय गुह्यतां द्वयं स्वच्छं गन्धादि संयुतं चित्रगुप्ताय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत सन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म युध्मः शरद्धविः मधुपर्कं समर्पयामि सप्तास्यासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अपध्नन् पुरुषं पशुं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि उच्चानि Take some akshatas. Nai yajnam varehe प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः येन देवा अयतन्त साध्यार्डयश्चये. Repeat it. वस्त्रयुग्मम् इदं देव शस्त्रहस्त गृहाणमे शास्त्रोल्ल वनसम्भूतं पापं मे विनिवारय वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यं रोगस्ताश्चक्रेवादिव्यान् आरण्याङ्ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामान्यज्ञरे छन्दागंसिरज्ञरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायत. Take some akshatas. Repeat it. उपवीतम् इदं देव कार्पास परिकल्पितं कृतान्तमित्र गृह्णीष्व कलिजं कलुषं हर आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः. उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. गन्धं गृहाण सुरभिं कुरु पाप विनाशनं गतिं देहि परां मह्यं गणयागामि मा मम आवाहिताभ्यः. Take some gandham kumkum, offer that kalasham. सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः. दिव्य परिमल गन्धान् धारयामि गन्धानाम् उपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. Take some अक्षतान् समर्पयामि. Take some flowers. पवित्राणि च पुष्पाणि पुष्पमालिकां समर्पयामि. पुष्पैः सम्पूजयामि. पवित्राणि च पुष्पाणि चित्रगुप्तगृहाणभोः कमलादीनि रम्याणि विमलं देहि मे पदं पुष्पमालिकां समर्पयामि. पुष्पैः सम्पूजयामि. And telling continuously Namaha Namaha, you offer some akshatas and flowers. If you can repeat it, you can't, don't repeat it, okay? Om Varunaya Namaha, Om Pratetase Namaha, Om Swarupine Namaha, Om Apampataye Namaha, Om Akaravahanaaya Namaha, Jaladhipataye Namaha, Om Pashahastaya Namaha, Tirtharadaya Namaha, Om Rishyasringaya Namaha, Om Spatika Varnaya Namaha, Om Anargha Manibhushanaya Namaha, Om Shweta Chitradharaya Namaha, Om Varuna Murtaye Namaha, Om Durgaye Namaha, Om Ganapataye Namaha, Om Kshetrapalakaya Namaha, Om Indraya Namaha, Om Abhayankaraya Namaha, Om Vastu Purushaya Namaha, Om Indraya Namaha, Om Agnaye Namaha, Om Yamaya Namaha, Om Nirritaye Namaha, Om Varunaya Namaha, Om Vajavaye Namaha, Om Somaya Namaha, Om Ishanaya Namaha, Om Vani Hiranyagarbhabhya Namaha, Om Lakshmi Narayanaabhya Namaha, Om Umamheshwarabhya Namaha. Offer that Navagraha Mandalas. Bhagavate Adityaya Namaha, Om Agnaye Namaha, Om Pashupataye Namaha, Om Somaya Namaha, Om Adhyo Namaha, Om Gaurye Namaha, Om Angarakaya Namaha, Om Prithivye Namaha, Om Kshetrapalakaya Namaha, Om Budhaya Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Brihaspataye Namaha, Om Indraya Marutpate Namaha, Om Brahmane Namaha, Om Shukraya Namaha, Om Indranya Namaha, Om Indraya Namaha, Om Shanescharaya Namaha, Om Prajapataye Namaha, Om Dharmarajaya Namaha, Om Rahave Namaha, Om Gave Namaha, Om Sarpebhyo Namaha, Om Ketubhyo Namaha, Om Brahmane Namaha, Om Chitragupta Namaha. Oh, we are doing Chitragupta Ashtotram, then Satyanarayana Swami Ashtotram. Repeat it. Papanashaya Namaha, Pado Pujayami, Kamalavarnaya Namaha, Gulpho Pujayami, Chitraya Namaha, Januni Pujayami, Chitrarupaya Namaha, Janghe Pujayami, Natabhishtadaya Namaha, Nabhim Pujayami, Drukodharaya Namaha,
उदरं पूजयामि प्राज्ञाय नमः हृदयं पूजयामि कालाय नमः कंठं पूजयामि बहुरूपाय नमः बाहून् पूजयामि अन्तकसचिवाय नमः अधरं पूजयामि मध्यस्थाय नमः मुखं पूजयामि करुणानिधये नमः कर्णौ पूजयामि पद्मनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि नानारूपाय नमः नासिकां पूजयामि ललाटाय नमः ललिताय नमः ललाटं पूजयामि श्रीचित्रगुप्ताय नमः शिरः पूजयामि सर्वेश्वराय नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम दध्नाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम मृकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नव्यादु सत्यानारायण स्वामी स्तोत्रम् स्वामी अंगपूजा नारायणाय नमः नारायणाय नमः पादौ पूजयामि शेषसायिने नमः रिपीट शेषसायिने नमः गुल्फौ पूजयामि कालस्वरूपिणे नमः जङ्घे पूजयामि विश्वरूपाय नमः जानुनी पूजयामि जगन्नाथाय नमः गुह्यं पूजयामि कमलनाभाय नमः नाभिं पूजयामि जगत्कुक्षये नमः कुक्षिं पूजयामि लक्ष्मी विलसत् वक्षसे नमः लक्ष्मी विलसत् वक्षसे नमः वक्षस्थलं पूजयामि चक्रादि हस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि चतुर्बाहवे नमः बाहून् पूजयामि श्रीकण्ठाय नमः कंठं पूजयामि चंद्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि श्रीशाय नमः नासिकां पूजयामि रवीन्दु लोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि दिक् श्रोत्रधराय नमः श्रोत्रे पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि. Now we are doing अष्टोत्तरं सत्यनारायण स्वामी अष्टोत्तरम्. ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकामिने नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यकल्याय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यजात्वदाय नमः ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमिने नमः ओम सत्यधन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्याधीराय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकलाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यामोघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यशुचये नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्यसंगाय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमयाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुन्दराय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः
ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिराय नमः ओम सत्यरक्षकाय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंवृताय नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः ओम सत्यपन्नये नमः ओम सत्यवाजवे नमः ओम सत्यशिक्षकाय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्यनीरजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यवाहवे नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्रे नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशरोषे नमः ओम सत्यमकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यधृताय नमः ओम सत्यभामावतारकाय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम श्री रमादेवी सहित रिपीट रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि. Offer kumkuma archana. Take some kumkuma. Offer Devi. You have bitter leaves. Iruka vetala iruka. You have bitter leaves. No, I just Take it. Put it down. Offer the kumkuma. Okay. Put it down. हाथ में नहीं रखते. Like this? Yes. 100%. ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम विद्याये नमः ओम सर्वभूतहितप्रदाये नमः ओम श्रद्धाये नमः ओम विभूत्ये नमः ओम सुरभ्ये नमः परमात्मकाये नमः ओम आदये नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्मालये नमः ओम सुतये नमः स्वाहाये नमः डायरेक्ट बोलना. सुधाये नमः सुधाये नमः सुधाये नमः धन्याये नमः हिरण्मये नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः विभावर्ये नमः आदित्ये नमः दीप्ताय नमः वसुधाय नमः वसुधारण्ये नमः कमलाय नमः कान्ताय नमः कामाक्षे नमः क्षीरोद संभवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः बुद्धये नमः अनघाय नमः हरिवल्लभाय नमः मशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोकविनाशिन्ये नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः देव्ये नमः पद्मन्ये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादाभिमुख्ये नमः प्रभाये नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्राय नमः चन्द्रसहोदर्ये नमः चतुर्भुजाय नमः चन्द्ररूपाय नमः इन्दिराय नमः इन्दुशीतलाय नमः आह्लादरण्ये नमः शिवाय नमः पुष्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाय नमः प्रीतिपुष्करण्ये नमः ओम शान्ताय नमः ओम विक्रमाल्याम्बराय नमः ओम श्रिये नमः भास्कर्ये नमः ओम बिल्वनिलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम यस्मिन्ये नमः ओम वसुन्दराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हरिण्ये नमः हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्ये नमः ओम विद्धये नमः ओम त्रेणसौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम नृपवेश्मगतानन्दाय नमः ओम वरलक्ष्मे नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मंगलाय नमः देव्ये नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्ने नमः प्रसन्नाक्षे नमः ओम नारायण समाश्रिताय नमः दारिद्र्यसंशन्ये नमः देव्ये नमः सर्वोपद्रववारिण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वर्ये नमः. रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्प कुंकुम अर्चनानि समर्पयामि. कल्पयन् बाहो
सुगंधं सुमनोहरं आश्रयदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां शाङ्गोपुलोधूपः सुगन्धः सुमनोहरः धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वनस्पतिसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपो उत्तमः आश्रयदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् आवाहिताभ्यः आवाहित आभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः धूपम् आघ्रापयामि। योजितं मज गृहाणं वलन्दीपं त्रैलोक्यनिरापहं भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः अभ्यागं शूद्रो अजायत। आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः दीपं संदर्शयामि। Take 1 spoon water, show that collection, put it that bowl. Dhupa deepa anantaram achamaniyam samarpayami. Take the fruit, offer the collection. Sprinkle the water, offer the collection. Bhurbhuvasvaha. Only one. Take some akshata. So like this. Om prana isvaha, avam upana isvaha, avam yana isvaha, om udana isvaha, avam samana isvaha, avam brahmana isvaha. Chandrama manaso jataha, yatso surya jayata, mukhaದಿಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರಜಾಯತ. Repeat it. Avahitabhyah सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः स्थापित फलानि निवेदयामि। टेक सम अक्षतः। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं तीर्ष्णोद्यौ समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दृशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्। पूगीफल कर्पूर ताम्बूलं समर्पयामि। समस्त उपचारान् समर्पयामि। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणरूपादिशेषधीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति द्रव्योसानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति सर्वस्याप्ये सर्वस्तदित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। स्वर्ण पुष्पं समर्पयामि। छत्र चामरादि समस्त उपचारान् समर्पयामि. We have 10 stories. Satyanarayana Swami 5 stories, Chitragupta 5 stories. Everybody can repeat it. Yes. Each one story. Hold akshatas in your hand, then repeat. Vratha. మీరు కూడా చదువుతారు కదా అంటే 10 కథలు ఉన్నాయి. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథలు 5, చిత్రగుప్తుడి వ్రత కథలు 5. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్పేస్తారు. చిత్రగుప్తుడి కథ ఇందులో మాత్రమే ఉంది, సత్యనారాయణ స్వామి మాత్రమే ఇందులో ఉంది.
is used. Sorry, we have only one Katha and Sathyanarayana Swami. Only one story. సత్యనారాయణ స్వామి Sorry, Chitragupta, only one story. అది మీరు ఇచ్చేసేయండి. నాకు అంత రాదు. కొంచెం అక్షత నేను చదివాను. ఇది పెద్ద కథ ఇంగ్లీష్. లెఫ్ట్ సైడ్ సారీ రైట్ సైడ్ పైన అయిపోయింది అంతే అంతే. ఫస్ట్ టైం మెల్లిగా చదవండి. తప్పులు చదువుతుంది, నెమ్మదిగా చదువుతుంది. అలా కాదు, తొందరపడి తప్పులు చదవండి, నిదానంగా కరెక్ట్గా చదవండి. ఒకవేళ మీ వల్ల కుదరలేదు అనుకోండి, ఒక పేపర్ చదివిన ఇంకొక Pournami Vratha Pooja. See Chitragupta Pooja. Chitragupta Pooja is performed in propitiation of Chitragupta, also known as Chitragupta, the chief accountant who maintains the account of merits and demerits of earthly beings in the court of Yama, the Lord who dispenses the course of subsequent births. There is an there is an incident narrated to showcase the greatness of this Vratha. There once lived a boy who was haughty on account of his intellectual abilities. His mother tried her best to instill a sense of discipline in him, but was unsuccessful in her attempts. Before her passing away, the anxious mother gave him a pertaining advice. She asked him to repeatedly chant the mantra Om Chitraguptaya Namaha. That is solution to Chitragupta, assuring him that please with this Chitragupta would lead him in the right direction. As he grew up, the boy's wishes also increased. However, he did not stop the recitation of the mantra. Yep. Okay. You can start from this. Second page. Little kind of merits. Going through the records of his merits and demerits, Chitragupta discovered that his demerits outnumbered his merits by a large margin, and that his days were numbered and were inadequate to get him any merit before he died. Since the man had been chanting his mantras, Chitragupta sympathized with him and appeared in his dream and said, "You have never performed any good action in your lifetime other than the recital of my name. To save yourself from the ill effects of your actions, you must dig a well in your field. Even if one cow drinks water from that well, you will enjoy life in heaven just for 1.5 heavenly hours. Yes, 33 crores of devatas, heavenly beings, reside in a cow's body. If many cows consume water from your well, you will get permanent residence in heaven. When Yama, god of death, inquires about your preference to enjoy heaven or suffer in hell, remember to ask for heaven first." The man took the advice given in the dream seriously and also dug a well in his field, but no water came out from the well. Owing to the
multitude of sins committed by him. 6 days elapsed. On the seventh day, a little amount of water emerged from the well. The man felt happy. With an intention to help the man further, Chitragupta assumed the form of a cow and standing near the parapet of the wall, bellowed loudly. Hearing this, one cow came and drank water from that well. So that At very instance, the man's life on the earth ended and he complained of chest pain and collapse. When Yama asked Chitragupta for the details of the good and bad deeds of the man, Chitragupta replied, "This wicked person has not performed any virtuous act, except digging a well from which only one cow has drunk water." Yama asked the man, "You are entitled to live in heaven just for 1.5 hours. Would you like to enjoy this first or the life in hell?" "I will enjoy life in heaven first," replied the man. But by then more water emerged from the spring of the well and many more cows had quenched their thirst. This helped in extending the man's eligibility for life in heaven. With the ever-increasing number of cows drinking water from the well, the man continued to lead a comfortable and happy life in heaven. It is evident from the story that even a sinner, by reciting the name of Chitragupta, can enjoy great benefits. Chitragupta is believed to have been born on the day of Chithra star in the month of Chaitra. Epics depict Chitragupta to have emerged from a portrait of goddess Uma. Lord Shiva hailed him as "O son of the art of drawing." Hence the name Chitragupta, Chitra meaning a form of art, came to be associated. There is also another version that he emerged holding in hand a palm leaf and a stylus to write on it. From the abdomen of a cow brought up by Indrani, this may be the reason why devotees who observe the Chitragupta Vratha give up consumption of milk and the milk products on that day. Also, the observers of this Vratha partake of food prepared without salt or alternatively consume only fruits offered in the puja. Chitragupta picture is to be drawn with the rice flour, holding a palm leaf and stylus for writing in his hands, ornamented with rings on his fingers and eardrops on his ears. Traditional belief is that on every Chaitra full moon day, Indra visits Kanchipuram, a town in Tamil Nadu, to worship Chitragupta. The wife of Chitragupta is Kanambini Devi. In the temple at Kanchipuram, the holy bath, Maha Abhishekam, is performed in the morning and the marriage ritual of the deities is celebrated in the evening. On this day, a full plantain leaf is spread on which is laid out all edible preparations with varieties of vegetables. After the puja, a new winnow consisting of 9 pulses, salt, camphor, cotton, and some writing instrument should be given to a Brahmin scholar. One observing this ritual should refrain from using salt or milk products. అంటే చైత్ర మాసం అనండి లేకపోతే అంతే కదా ఉంచుకున్నారేమో Okay, chapter 1.
Worship of Lord Satyanarayana, also known as Sri Mahavishnu, is an integral part of Sanatana Dharma. This auspicious Satyanarayana Katha narration comes from one of the 18 Puranas, the Skanda Purana. It is in the form of a dialogue between Lord Vishnu and sage Narada. Sri Satyanarayana Puja gives devotees the opportunity to shower the Lord with prema and bhakti, love and devotion, and in turn the four rewards of life are fulfilled: dharma, spiritual need; artha, material need; kama, personal need; moksha, liberation. Once 88,000 rishis assembled at Nai- Nain- Naimishal- Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Puranas, "O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Miss Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during one of his so- sojourns to the various worlds, came to the earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring them salvation, Narada traveled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with Skantha, Shankachakra, Gada, and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute, of the troubled, I surrender at their feet." Lord Vishnu said, "Narada, why have you come here? Tell me what you want, and I will fulfill your wishes." To which Narada replied, "O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow their grace and reveal to me as to how they can be helped." Lord Vishnu replied, "O Narada, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond." Oh, hearing this, on hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before." Lord Vishnu answered, "This puja can be performed in any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the gods. After the puja is over, he must read Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja brings contentment. End of chapter 1. Om Sati. Monkey Swift continued addressing the assembled rishis. "O rishis, I will tell you who all have observed Satyanarayana Puja in their past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued with hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu
took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows, so you should perform his puja and reap its benefits." Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vratha to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day, he got a lot of money with which he bought fruits and milk, curd and honey, and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharishi Sut thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis again addressed Maharishi Sut, "O great one, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Sut continued, "One day when the poor Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayana's grace, spoke. This is called Satyanarayana Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana on his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought banana, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha, salvation. Next chapter 2. Sri Om Sri Satyanarayana Namaha. Chapter 3. Maharishi Suta continued. O best of ascetics, I will now tell you the story first. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He has mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmin. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja at the banks of river Bhadraki. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then, by the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived, and in due course, a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show.
But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura, that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day. One day in Ratnapura, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law, who were sleeping under a tree, and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was over and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Kada in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vratha herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison, as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth, and children would all suffer. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You two have suffered a great deal because of your faith, but there's nothing to fear." The king returned their merchandise and gave them new clothes and lots of gifts and bade them goodbye. End of chapter 3. Chapter 4. Sadhu and son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test the Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin were thinking of stealing my things. We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord uh, Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed and went to the seashore to meditate. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law, who said, "This must be the curse of ascetic. He must be mystic. Let's go to him and ask for forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend you from form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray within my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so.
She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonder-struck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord again and again. At this, Lord Satyanarayana, savior of sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Puja every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. End of chapter 4. Chapter 5. Some farmers were hoping to perform Satyanarayana Puja. He was unable to refuse the prasad. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him, the Lord Satyanarayana was already in the He went back to the palace, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king remained everything that last found. He lived happily and lived right in her after that. Maharati Sudha said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was presented by Lord Vishnu and Narada Muni. By observing his Vratha, mankind can attain salvation. In this Kali Yoga, observance of the Vratha can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharati Sudha, after which the wishes returned to the respective kings.
இந்த பிரசாதத்தை சொல்றேன்.